Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of Eco Talks. Today I have on board with me Aroob Abbas. She's someone who works as a stylist, is an art director, as well as owns an online thrift store page. For her, sustainability is everything. She incorporates ethical practices not only in her professional life, but also her personal life. So let's just dig into this conversation and know more about the ways she explores and incorporates sustainability in both her personal and professional life and how it goes about. So, Aroob, you being someone I know personally as well who practices sustainability so cautiously and इतना आप उसको मतलब regard में रखती हो तो the word sustainability, its importance कब पहले सुना कब इसके बारे में समझा कब इसको मतलब in action लाया please share a little bit about it. Okay, so I got to know about this whole concept, not this word, when I was like 19 or something. पहली दफा जब मुझे इस concept के बारे में पता चला कि we can like circulate our own clothing, yeah, use second-hand items and used products and sell it, yeah, maybe like send it to like other people. इस तरह, like the whole fashion system works. When I was like 19 और मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि I got this like experience कि she took me to this bazaar जो होते हैं Sunday bazaar, Wednesday bazaar. तो that was a whole new world for me कि भाई आप वही चीज जो 12-13 हजार में आप किसी गुची के स्टोर और वर्साचे वगैरह से ले रहे हैं, यप, वो आप आराम से ना you can buy it for cheap in second hand. So it was very bizarre to me क्योंकि usually हम लोग अपने उतरे हुए कपड़े और second hand चीजें अपनी like charity वगैरह में कर रहे होते हैं. We don't like buy for our own use. So I was like, why not? We can totally do it. I can totally buy something that is second hand in good condition and wear it for my own purpose. And then if it's cheap, it works for me. Okay, so then I searched it up, and at that time I also used to watch YouTubers के vlogs वगैरह. So there's this YouTuber Emma Chamberlain. So she does like this thrifting thing a lot. तो वहां से भी मुझे I had this concept के oh okay, there's this thing thrifting. Also. Yep, thrifting and sustainable clothing, how to like combat fast fashion वगैरह. And I was like, what is this fast fashion और ये landfills वगैरह. So I got to know कि like how आपकी जो बड़े बड़े brands के clothes होते हैं वो क्या कहते हैं, they end up in these landfills that destroy our environment. Then I studied a little bit more, and that's how I got to know sustainable fashion. Now that you have a thrift store page online, ठीक है, so I would like to know कि उस पे आप सिर्फ अपने items डालते हो for people to buy या you also like take in stuff from others and then post it on your page? Okay, so a mix of both. I have like marketed to my friends and they were like, yeah, हाँ हमारे पास we have some stuff that we have not used or we have only worn once and we would like to pass it on. I have also एक point पे contacted dealers जो कपड़े क्या कहते हैं इस तरह बाजार वगैरह में stalls लगाते हैं. And they're looking for shops, online shops जो आगे बेचना चाहें. So I have also sourced my clothes from them and like अपने personal clothes जो भी मुझे मिल जाते हैं that I don't want to wear anymore and it's in good condition that I can pass on. सही बात है. So moving on to the other thing that I'd like to shed light on. I know that you work as an art director and you also work as a stylist, fashion stylist. ठीक है. ये बताओ that you having a thrift store page, you having a mindset that promotes sustainability, does this incorporate or does this show in your work and how do you incorporate basically sustainable practices in your work? Okay, so a big part of क्या कहते हैं art direction and styling is sourcing चीजें जो क्या कहते हैं वो exactly match requirement of the director. So we need to get the exact match. अब ये मुझे fast fashion store जैसे हमारी local shops हो गए या कोई brands हो गए उसमें मुझे immediately I cannot find the same thing. However, जो इस तरह के बाजार होते हैं थ्रिफ्ट बाजार बोलते हैं, संडे बाजार बोलते हैं, they sell इस तरह की like prop type stuff that I can use in my direction that I frequently antique use in my, yeah, antique चीजें. Thank you, that's the word. Antique चीजें हो गई, पुरानी बहुत like vases and stuff that I can totally like put it in my
आर्ट का स्टफ. As a stylist, as an art director, as somebody who owns a thrift store page, do you educate your followers? Okay, first of all, I'd like to clear this. I know that you had a page पहले दूसरा, लेकिन वो फिर किसी वजह से बंद हो गया Yep, था, yep, and जो भी you had like a good amount of followers on. yep. Keeping in view that you had, and you still have a public account, okay, and you still post about this. Do you like try and educate your audience in some way? Do you, or it's just like it just comes out naturally? या आप कोशिश करते हो कि आप एजुकेट करो अपने फॉलोअर्स को, बताओ इस बारे में? Okay, so from my previous page experience, I used to put up these posts as well, reels के form पे, where I would educate my followers what's the importance of, like, why am I exactly doing this? मैं क्यों इस तरह की thrift shop run कर रही हूँ? तो I would like put up these informative infographics के साथ post के why you should like buy things क्या कहते हैं second hand में या from thrift stores instead of fast fashion brands like आपके outfitters हो गया जो एक्सपेंसिव करके वही चीज बेच रहे हैं जो मैं भी आपको सस्ते में आराम से बेच रही हूँ. जस्ट लाइक कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है. It's clean and it's ethical. तो क्या कहते हैं I used to like put up बिल्कुल. reels and stuff. फिर दूसरे पेज पे I feel like after doing all that I feel like आजकल है ना इसकी awareness is kind of इतनी कि जो मेरे पेज पे आएगा वो यही सोच के आएगा कि अच्छा मैं इस जगह से वही चीज इतने में ले लूँ जो मैं बड़े ब्रांड से ले सकती हूँ. And instead of like wasting product, I can totally get something that I like from the store or whatever. Keeping all of this in view, what is your perspective on the environmental impact of fast fashion? Okay, so जब मुझे शुरू में पता चला ना कि कपड़े end up in like these बड़े बड़े क्या कहते हैं छोटे से आइलैंड एंड लाइक बड़े बड़े माउंटेन्स बने हुए होते हैं. पता नहीं क्या. आई सॉ दिस पिक्चर्स लाइक देयर आर पीपल लिविंग देयर एंड क्या? उधर जानवर वगैरह एंड दे जस्ट लाइक आई सॉ दिस डॉक्यूमेंट्री जिधर है ना वो कपड़े जाके उन आइलैंड्स वगैरह पे डंप करे. देन पीपल वर लाइक ट्राइंग टू लिव इन दोस बड़े बड़े कपड़ों के माउंटेन्स एंड इट वाज लाइक वेरी अनहाइजेनिक फॉर देम. एंड ऑब्वियसली लैंड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि कितना वो कपड़ा वहां पे रह जाएगा और फिर वो डिकम्पोज होगा एंड इट वुड लाइक इनकॉर्पोरेट पानी वगैरह में एंड लाइक destroy ecosystem वगैरह. I believe it's like a very healthy practice and everyone should be doing it and everyone should be promoting it. That's my belief on it. True. कोई ऐसा positive impact that you've witnessed as an owner of a thrift store or as a art director or a stylist? कोई positive impact, कोई positive story that you'd like to share with us? मेरी मेमोरी में कोई एकदम से पॉप अप नहीं हो रहा बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में बता सकती हूँ लाइक एज अ बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव. जी जी तो बताएं. I was like very brand conscious and very obsessed with like buying new things for like new events and stuff. So yeah, and so were my friends. तो क्या कहते हैं and it would like impact my pocket a lot. And then after I found out कि where this stuff जो leftover stuff होता है leftover export stuff होता है where does it end up? It like I'm like an empath and I feel like a lot for other people for some reason. Like it sounds a bit cliche but जब आपको पता चलता है कि आपकी इन हैबिट्स की वजह से और बहुत से लोग आपसे मिलो आपसे नीचे के लोग बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं आपकी स्टूपिड हैबिट्स की वजह से. तो क्या कहते हैं इट डज लाइक अवेकन दिस सेंस ऑफ मोरालिटी इन. तो खैर एनीवे आई ट्राइड क्या कहते हैं मैं चीजें फिर इधर उधर से खरीदना शुरू हो गई एंड आई वाज लाइक पेंडेमिक कि मैं इधर उधर मैं आउटफिटेड से चीजें नहीं लूंगी. मैं गुलामा से जाके बड़ा सा सूट नहीं लूंगी. आई कैन लाइक इजीली बाय इट सेकंड हैंड में किसी थ्रिफ्ट स्टोर से. तो माय फ्रेंड्स स्टार्टेड नोटिसिंग दिस एज वेल. दे वर लाइक ओह तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है तुमने कहाँ से लिया. मैंने कहा आई थ्रिफ्टेड it. So they were like, "Oh, that's so cool! You can find this stuff from thrift stores." I was like, "Yeah, why not? You should तो try पहले तो आप looking up." thrifting की बात भी नहीं कर सकते Exactly, सामने. exactly, आप तो exactly. मतलब एक सबको वो शर्म आ रही होती जज थी. करें. अब it's alhamdulillah and that's a really good thing. हाँ अब मतलब Yeah, people are normalizing it and it should be normalized. exactly, exactly. पहले तो इट वाज सच अ स्टिग्मा. अब अगर मैं संडे बाजार से कुछ शर्ट लेकर आ जाऊँ तो सामने वाले को ना ऐसे हो रहा होता था कि ओ संडे बाजार ओके लाइक दैट्स अ वियर्ड प्लेस. और मेरी अम्मी भी खुद कह रही थी बेटा क्या और कोई जरूरत है आपको उधर वहां मिल से जाए फैमिली का तो बस वो तो छोड़ ही दो. मेरी नानी से लेके दादी से लेके क्या तुम दूसरों के उतरे हुए उतराने पहन रही हो और क्या कहते हैं ब्ला 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 यू नो ऑल दोस टॉन्ट्स. तो क्या कहते हैं फिर इवेंचुअली उनको भी अच्छे नहीं लगने लगे. मुझसे पूछ रही है आपने कहाँ से लिया तुम पे शर्ट बहुत अच्छी लग रही है. मैंने कहा वो किसी की मैंने कहीं से लिया ही है सेकेंड हैंड ही है. सो इवेंचुअली इट्स लाइक एन एक्सेप्टेबल थिंग अब आई फील लाइक हम सबके बीच में. बट आई थिंक जब हम लोग बहुत
एक फोकस कर लें एक सस्टेनेबल ऑप्शन पे, तो आई फील कुछ कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं इसके साथ, यू नो देयर आर लाइक सम नेगेटिव पॉइंट्स टू इट एज वेल, मे बी टर्म्स ऑफ द कॉस्ट इट brings out, or you know like many other factors also. तो अगर हम लोग बहुत cautiously and बहुत focus में sustainable options को रखें, तो do you think कि कहीं ना कहीं कोई constraints होते हैं, कोई negative points होते हैं, कोई challenges होते हैं? तो do you have something to share either with your profession or you know in your personal life कि कैसे sustainability की वजह से there are certain factors or certain I could say challenges that you face? Okay, so if I consider my shop, even though there is like a lot of customers that I get, बहुत से लोग they're like worried if it's sanitary, if it's ethically sourced, या अगर मैं ज्यादा पैसे बढ़ा के उनको नहीं दे रही हूँ, that I try not to do. पहले शुरू में I used to do it कि नहीं मैं फिर profit margin रख लूँ, but it's not ethical कि आप किसी जगह से कम में लेकर आकर ज्यादा में बेच रहे हैं. And this thing I notice a lot दूसरे thrift stores में कि 200-300 रुपए की चीज होगी वो 1000, 1200, 2000 में आराम से आगे करेंगे. The whole sanitary thing, people are not, they don't trust you on this thing. बहुत से कस्टमर्स थे वो रिटर्न कर देते हैं आपको क्योंकि I run a online thing, so they return me their product, so it's like a business drawback kind of a thing. But if I consider this whole sustainable fashion thing, इसमें सबसे बड़ा flaw यही है कि people are like it's not sanitary, or if it's ethically sourced, or if we're doing the right thing or not. अभी तक like even though it's like a cool thing, but people are wondering if it's the right thing or not. क्यों हम इन चीजों को खरीदें और charity में नहीं कर रहे? Why are we just buying it? Why not? Why aren't we like just sending it off to people who really need it? I hope I'm like clear Also, about. Aruba, I think कि सस्टेनेबल ऑप्शंस अगर जनरली देखें, अगर हम कपड़ों से हट जाएं, अगर हम मे बी कुछ आइटम से हट जाएं, सो सस्टेनेबल ऑप्शंस डू आल्सो कम एज यू नो अ रिस्ट्रेन ऑन योर बजट आल्सो, यू नो लाइक आपका थोड़ा बजट भी ऊपर नीचे हो जाता है. कुछ चीजें आई फील, यू नो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एन इको कॉन्शियस पर्सन, मगर मैंने देखा है कि सस्टेनेबल चीजें, इको फ्रेंडली चीजें आर ऑल्सो एक्सपेंसिव. Is that They are it's subjective honestly. yeah. मैं personally I believe कि even if it's expensive, even if it's not attainable, अगर इसका purpose of selling जहाँ से आ रही है, आप जिस तरह खरीद रहे हैं, और if it's usable to some extent, तो like एक moral conscious के plane पे रख के अगर हम देखें तो you should focus on if you're doing the right thing or not. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, how you know thrifting is being normalized now, people are accepting it and they're open to it, but like इसका एक जो crux है या sustainable, the word sustainable, the idea of it, do you think that people or the world is adapting to it now, या अभी भी ये बहुत ही एक unknown term है to the world? I feel like ये अभी भी एक अननोन टर्म ही है. थ्रिफ्टिंग नहीं बोलेंगे उसको, सस्टेनेबल फैशन नहीं बोलेंगे. अगर चीजों में आ जाएगी दे वुड बी लाइक हम एंटीक चीजें ले रहे हैं, हम लोग सस्टेनेबल फैशन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे. जहां तक कपड़ों की बात होगी, हमने सेकंड हैंड आइटम ले लिया. सो देयर इज ऑलवेज अ स्टिग्मा दैट स्टिल गोइंग ऑन. पीपल आर नॉट अवेयर कि ऐसा भी कुछ, there's this whole thing कि आपको ethically कपड़े खरीदने चाहिए, ethically अपनी चीजें सोच करनी चाहिए. So yeah, I feel like हमारी community में especially बच्चों में there's this Gen Z में concept है कि वो हम thrifting जा रहे हैं, but जहाँ तक boomers की बात आ गई, उससे पहले की generation की बात आ गई, they're like not aware of this whole thing. उनको बस ये होता है कि हाँ हमने सस्ते में जाके कहीं से एक चीज उठा ली, एंटीक सस्ते में ले लिया, लेकिन क्यों कर रहे हैं हम, इसका क्या पर्पस है, क्यों हम चाहते हैं कि इसको प्रमोट करें, दे नॉट अवेयर ऑफ इट. हाँ, I hate to agree and I hate to say this, but मुझे भी इस टर्म के बारे में इतना नहीं पता था. Like Okay, honestly, I was opened up about this, you know, like what 4-5 months back. पूरा इसका you know like एक A to Z समझना पूरे इस टर्म को, वही वाली चीज कि हाँ थ्रिफ्ट पता था, हाँ भैया it's a thing now, सेकंड हैंड कपड़े खरीद लिए and सब कुछ. एंटीक चीजें, the way you mentioned ना, एंटीक आइटम्स, हाँ एंटीक चीजें खरीदी हमने जाकर. वही वाली बात की. एंड आई थिंक हम लोग डेली लाइफ में भी इतनी चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं सस्टेनेबली, जिसको वो कर रही होती हैं ट्रू, cater, लेकिन we're just not aware of it.
I Exactly. think because हमें Totally agree. उसकी information नहीं है, awareness नहीं है, and कोई दे भी नहीं रहा तो free Exactly, लगेगा like उन्हें. पता ही नहीं है, कोई बता ही नहीं रहा. Exactly, exactly. मुझे खुद है ना, I was like, I got to know about कि पूरा this is a whole So fashion thing. This isn't just a fashion thing. This is actually a क्या कहते हैं eco-friendly thing going on. COVID के time पे, that's when this whole thrift thing got like very famous. So I got to know it through a page. मैंने कहा है ये क्या बोल रही है. So I searched it up और फिर मैंने अपना भी previous experience को रख के देखा. मैंने कहा oh right, of course I'm supporting the environment without even like knowing I'm doing it. So I feel like अगर लोगों को पता भी चलेगा ना कि हम कोई अच्छी चीज कर रहे हैं इससे, तो शायद लोग वो और करना शुरू हो जाएंगे और चीजें इस तरह की प्रमोट करना शुरू हो जाएंगे. मे बी जैसे Zara वगैरह की शॉप्स वगैरह होती हैं, there can be a whole thrift store की proper shop where you could just like go malls बल्कि में है and भी, buy you it. know, like ये इधर बोर्ड बेस कह रही हूँ, गल्फ में there's this Yep. Karachi play hub, like a पूरा thrifting, you know, hub of Exactly. thrift I did good not know stuff. about it पहले. I did not know about it पहले. I got to know it अभी recently. कि अच्छा there's a mall too. So I would like totally like to promote this stuff. Amazed. Yes. Chalo, with this, Aroob, I would like to end our podcast. It was really, really nice having you, and Thank I you so really much liked for our having me. conversation, chit chat, and information, of course. Okay, thank you Bye so bye. much.